हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं जिविक्स नाम से जाना जाता हूँ और मैं एक वैलोरेंट प्रोफेशनल प्लेयर हूँ जो कि अभी सॉलिड स्पोर्ट्स के लिए खेल रहा हूँ मैं। Since last 2 years, if you follow Valorant Pakistan, you would know that Salt Esports has been a team that has remained among the top 3 best teams in the country. Jivix, the underdog addition to Salt, joined them about a year ago after the VCC 2021 ended, and he played as a sub for Arrow in that tournament. तो जरूर रहेगा लेकिन सेटल करना उनको आता है। जिविक्स का सामना करेंगे। What was that shot? Jivix, this man is on fire. एक अलग ही गेम प्ले यहाँ पे डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 पिक्स निकाल चुके हैं। आखिरी 2 प्लेयर्स बचे हैं टीम एक्सप्लॉइट के। जिविक्स की तरफ से एक और इंसेन फ्लिक शॉटी के साथ HSB को शट डाउन करेंगे और 4K के साथ। One thing I like about Jivix is he has a really friendly character, which really lightens up the mood of the whole team. He is really बहुत शुगली बंदा है, I would say. Whenever the team is really sad or after a loss, he's always there to cheer everyone up, and I feel like that's really important in a team. You need someone like that, and he's really a really down to earth guy, and he's really good addition to the team, and most importantly with really good skills. He's also coming to content soon, which is also a really good plus point, and he's also passionate about content, so that's a really good upside to Jivix. Top of the generator takes down one, collected another information. जिविक्स को मैं CSGO के टाइम से जानता हूँ और काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। अब सॉल्ट ज्वाइन करने से पहले मैंने खुद, जब मैं वैलोरेंट में वापस आ रहा था, तो मैंने खुद जिविक्स को बोला था कि यार मेरे साथ आ गया टीम में। लेकिन तब वो बात कर चुका था सॉल्ट से, तो उसने बोला कि यार मेरी बात हो गई, मैं अब सॉल्ट में खेलूँगा। पहले भी इसको बोला हुआ था कि मैं आ जाऊँगा। विद टाइम हमारा बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। मैंने टीम एरो ज्वाइन की थी, बट फुल टाइम के लिए नहीं, सिर्फ VCC की ज्वाइन की थी। और उसके बाद जो मेरी पहली प्रॉपर थी वो सॉलिड स्पोर्ट्स। एरो के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी फर्स्ट टीम थी वैलोरेंट की, तो प्रॉपर टीम थी, कोच था गनर हमारा। और MS के तो काफ़ी कुछ सीखा था और गनर से भी काफ़ी कुछ सीखा था, क्योंकि वो एक्सपर्ट में था पहले। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम जीते नहीं, बट मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आई थिंक मेरे साथ डार्की, गॉडचाइल्ड, MS के मैं और प्रोटा थे, और गनर हमें कोच कर रहा था VCC टाइम में। अच्छा टाइम था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रोफेशनल टीम थी पाकिस्तान में वैलोरेंट की, और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी और मज़ा आया उनसे एक्चुअली खेल के VCC। As someone who didn't have much in-depth knowledge about the CS scene within Pakistan, I wasn't really sure about who Jivix was, and I'm pretty sure most of the people didn't. But once he got on Arrow, that's when he got highlighted into the mainstream of Valorant. And now that he's with Salt, First of all, when Jivix joined Salt, in the beginning, Hamza Beast, he suggested him that he'll be a really good player in the lineup, and he said he has a lot of potential, and he has seen the guy's potential in CSGO. क्योंकि बीस ने मुझे पहले से बोला हुआ था कि हमारे साथ तू आ जा। A lot of roles were switched with Jivix was not duelist before, but now he was put on the duelist role, and after that we've seen that duelist suits him better than any other what I would say is a role in a lineup. So I feel like putting them here was a really good decision, and I feel like this roster has a lot of potential. A few changes can be made. Obviously, every player needs to improve and bring their A game to every single game they play. So moreover, I just want to see what this roster holds, and hopefully the goal is to beat Exploit soon and be dominant over them. that's when he caught my eye as well. I believe there was a specific round on Breeze. I'm not sure who he was playing against, but he clutched up a 1v3. I'm not certain it was a 1v3 or a 1v4 on Breeze, and that's when I really thought that okay, this guy has some serious potential. ये अक्सर यार हम जो मैच हार रहे थे वो बहुत एक्सट्रीम गंदा था मैच, और उसकी वजह से काफ़ी चेंज भी है। टू बी ऑनेस्ट, दोनों टीम ने बहुत ही गंदा खेला था। अगर दोनों टीम्स कोई अच्छी टीम खेल रही होती, चाहे वो पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो, तो बहुत ही गंदा पिटता है, जैसे हम खेल रहे थे EXR में। अब ये हमने भी भंड बहुत मारा था, क्लैरिटी ने भी बहुत भंड मारा था,
और हमने ज़्यादा मार दिए, हम हार गए। उन्होंने कम मार दिए, हम हार गए। बस यही था, और कोई मतलब दोनों आई थिंक सेम लेवल की टीम्स में था ना। He clearly has shown his potential in the recent VCC qualifiers when he placed top 2, just coming short against Exploit, and they had a pretty close matchup against Gold Particles as well, where they could have possibly gone into the playoffs. The first VCC was a really roller coaster journey for us. First of all, we beat Exploit in the first VCC qualifiers, and we were the first team from Pakistan to qualify for VCC. That was a really big moment for the org, and especially for the team to play at this level, because we were obviously gradually increasing as a team, as an org, but we were never at that top level. But we got to compete at the level, and it was a great eye-opening experience for everyone in the team. Moreover, coming over to the second VCC, we were again quite skeptical going into this, because when picking up the roster, we on paper every roster seems really good, but when you see that roster in action, there's a lot of changes that comes to hand. A lot of things don't go to plan, let's say. Our first rosters debuted in GXR qualifiers, and in GXR qualifiers, as all of you guys know, they lost to Clarity, and we didn't even qualify for the main event in our own country. Then moving on to VCC, our hopes were not that high, because Fear Legends roster was looking really solid, and Clarity's roster was looking okay, but we were confident that we would be able to beat them. After that, when they defeated Fear Legends, our hopes were quite high, and we defeated them with quite a dominant match went through. Then after Fear Legends, we also defeated them with the dominant matches. After that, the grand finals was Exploit versus Salt once again, and we were quite confident we were going to take out Exploit, and everything was looking good, but things didn't went our way, and we move on to more opportunities in the future. जब हमारा VCC 2022 का जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो हमें बाकी टीम से एक एक्सप्लॉइट को इजी ब्रैकेट मिली थी, और दूसरी सीडिंग जो थी वो हमें मिली थी। तो हमें शुरू में ये तो पता था कि हम सेमीफाइनल तक तो चले जाएंगे, फिर नीचे से हमारा सॉल्ट के साथ या FL के साथ मैच होगा, और हमें टू बी ऑनेस्ट लग रहा था कि FL के साथ होगा, क्योंकि FL की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी पीछे से। VCC का एक्सपीरियंस काफ़ी हार्ड था हमारे लिए, क्योंकि हम उससे पहले GXR भी हार चुके थे, और हमारा काफ़ी टीम का मॉरल बहुत डाउन हो चुका था, और कोई भी आई थिंक हमारे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम FL या क्लैरिटी को हरा पाएंगे। बट जब हमने फिर स्टार्ट किया, FL को हराया और क्लैरिटी को हराया, तो फिर टीम का मॉरल बहुत हाई चला गया था। तो जब हमने देखा कि भाई क्वार्टर फाइनल में सॉल्ट ने FL को हरा दिया और काफ़ी डोमिनेटिंग फैशन से रहा, तो हमें था कि भाई अब सॉल्ट तो काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। तो मुझे ये था उनके साथ मैच से पहले कि हमारा मैच जो है कुछ नहीं तो क्लोज जाएगा, जीत कोई भी सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, और जिसकी वजह से उन्होंने हमें भी काफ़ी डोमिनेटिंग वे से उन्होंने हमें भी हराया, और आई अप्रिशिएट दैट, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। अगर यहाँ पर टैग होते हैं गनर्स, तो इंस्टेंट पिक हो सकता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्लोज थे बीस्ट, एंड दैट व्हाट The VCC journey in this year has been really great as well. Initially, when they played in the GXR tournament, their showing wasn't as what people expected. They lost to Clarity in the quarterfinals, where apparently, according to Jivix, both of these teams played pretty terribly. But now that they have beaten Clarity in the VCC qualifiers 1, it clearly shows the true potential that this team holds under the leadership of Gunnar and the rest of the players, of course. Moving over to 2022, it's a really solid esports startup phase was in 2021, and moving on to 2022, what we just want to get out of that startup phase and be actually self-sufficient and actually increase our budget day by day. So as of now, I think we're the only team in Pakistan that is 40% self-sufficient. That's for brand reasons alone. And moving onwards, we are hoping in the next few months we make it 100% self-sufficient, and then we also get more budget to actually expand into other, let's say, mostly not even other games, especially content, because that's my main goal right now, is to have PUBG, Valorant, Rocket League, FIFA, and have a really good content team on board.